Hello and welcome to Political Adda, the Print's weekly show where we discuss an important political issue of the day. Today we'll be looking at Bihar, where Chief Minister Nitish Kumar, in a recent statement, has said that Tejashwi Yadav of the RJD and of course son of Lalu Prasad Yadav, former Chief Minister, will be taking the alliance forward in the 2025 state elections, and that he will not be the chief ministerial face for the 2025 state elections in Bihar. Mr. Nitish Kumar has also said that during this time he will be liaising with opposition parties to get them together as a force against the BJP. So what we are discussing today is what this means for the next Bihar elections, what this means in terms of national politics, and also what it means specifically for Tejashwi Yadav. Joining us today, we have Mr. Naval Kishore Chaudhury, political analyst and professor of economics from Patna. Thank you so much for joining us, sir. And in the studio with us, we have from our political team, Mr. Shanker Arnimesh, and our political editor, Mr. D.K. Singh. So, सर आपके पास पहले आना चाहूँगी. नीतीश कुमार का ये जो टाइमिंग है स्टेटमेंट का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी भी बिहार का चुनाव 2025 में है, अभी लगभग 3 साल बाकी हैं. एंड आपके हिसाब से ये मोमेंट उन्होंने क्यों चूज किया, ये बताने के लिए, और इससे वो क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं? He is under great pressure to give up. The pressure is from RJD, Tejashwi Yadav, and his father, Lalu Prasad Yadav. It's time now. Your time is up. Give up. Hand over the reins of Bihar. And this was part of the understanding which both the parties entered some months back. You remember? In August. This was the understanding. I have reasons to believe that what I am saying is right. I talked to people from RJD. What is the time frame when Nitish has agreed to give up, hand over? That means Chief Ministership to Tejashwi. And I was told it's just before the budget session. Tejashwi-led government would like to have a budget of its own. And you know, now time is for the budget. Now the pressure was on right from the beginning. You might remember Singh, the RJD president, a state level president, said a number of times, Nitish will go to the center, will take care of the nation, as if his wish was the final word and the final, but then this was what RJD wanted, and Tejashwi will leave Bihar. And many other leaders said that, to the great embarrassment of this great leader known as Nitish Kumar. Nitish was very uncomfortable. He was very insecure. And you know, he also, as part of the plan, visited a number of states, with a number of opposition leaders. Right after that agreement, when the new dispensation, political dispensation called Mahagathbandhan, took over the reins, political reins of Bihar. But after that, what happened? Calm, quiet, lull, no activity. And there were reasons for that. With the Desh Yatra, Bharat Jodo Yatra, which helped establish the leadership of Rahul Gandhi in Congress and the prospects of Nitish getting the approval of all opposition parties as an alternative to Narendra Modi. Probably Nitish realized that he had not much of a prospect at the national level. He kept quiet, and this quiet disturbed the RJD dispensation. Said no. You have to implement the agreement. And in any case, as you know, last assembly elections, there was hardly any
difference between the two, I see, even though I am not a psephologist, I don't want to talk about myself. If you read the newspapers, including my interviews to your paper, I have been saying before the elections that this time NDA will just scrape through. Even the day the counting was done, a leading newspaper published my interview, and I said just scrape through. So as you know, final result was just scrape through. But for a few seats, Tejashwi would have taken over as Chief Minister. So Nitish knows it very well that not only his numbers were very lower than the earlier numbers, he might say Chirag factor and this factor and that factor, but then fact was his numbers were lower than the numbers which the JDU used to get in the last elections. So he had hardly any bargain. You also remember Nitish said that this time he is not going to take Chief Ministership because his numbers are much lower as compared to BJP. But then he became the Chief Minister. So he knew his vulnerability. Now he's very disturbed. He's very insecure and the pressures are mounting. Naturally, you will see that he has to do something. He's through this statement saying, giving message, telling the RJD, look here, I will leave at my terms, on my terms, not your terms. Don't worry. In any case, I am going out. I'm going out. But wait till the next elections. Let's see what happens. Second, he also wants to send another message, which I will tell in the media, different sections of the media. He's sending a message to Tejashwi also in a different way. Look here, my options are open. Don't think that I have all options are blocked. Over. Nobody knows. Nitish changes sides again. And my feeling is, you may or may not believe, my friends in the media may not believe, that even now, Nitish can change sides. Being a Machiavellian politics at its best or at its worst, you can never predict Nitish. And knowing the position of BJP, in spite of the fact BJP is certain taking up the challenge in a very, very big way, could result is another pointer. BJP knows well that greatest stake of BJP is the next parliamentary elections, not the assembly elections. I have a question here. Of course, whenever Nitish Kumar says something, announces something, there is never a full stop. There are always some hidden semicolons, commas, colons. So nobody trusts that. My question to you is, now what are the options for Tejashwi Yadav? The options are very clear. Even today, there are only two options. He waits, which is not likely to do. This is my feeling. He's not likely to wait. He will put further off pressures. It's time now to take over. Second option is that he can get a few members of JDU resign and he gets the majority on his own. Mahaganwan comes to power on its own. A few members who can be accommodated in the Legislative Council. This is the standard practice, national practice, practiced by great parties. Great parties. So a couple of months... Talk of people. So Tejashwi today, if he wants, but he doesn't want that. For no reason. Why? Because he now wants to be an unchallenged leader of mandal politics in Bihar. So one of our viewers, sir, has a question on exactly the point of governance that you were talking about. So he's asking, how can Tejashwi Yadav counter the Jungle Raj narrative, which is quite strong against his party, the RJD, even though the new voters in Bihar at this point must have heard stories from that era and may not have experienced it themselves? How can Tejashwi Yadav counter this Jungle Raj narrative?
You have already answered the question. You put the question and you answer the question. Well, whoever had the question. Second part. Now, many of the young voters didn't see those dates, which I saw. I can tell you, I was looted twice on main Socrat, but opposite the Patra University. One day I was going to be BHU to deliver a lecture in the Faculty of Social Sciences, and just on the main road opposite the university, I was looted. Another day near Gandhiwala. So that was, younger people have not seen it. And now when you don't see that with experience, young generation have not seen that even men, let alone women. We'll come to you with a few more questions, but before that, Shankar, इस पॉइंट पे आपको लाना चाहूँगी क्योंकि आप बहुत दिनों से बीजेपी कवर कर रहे हैं, एंड देयर इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर डीके सर ऑन अ सिमिलर मैटर दैट आई टेक टू हिम. लेकिन बीजेपी ये जो अनाउंसमेंट है नीतीश कुमार का, उसको कैसे देख रही है? एंड जैसे प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे हमें, नीतीश कुमार हैज ऑलवेज ही इज गॉन टू वन साइड देन टू अनदर साइड. सो हाउ इज द बीजेपी ऑल्सो इन द होप कि ahead of 2025 there's a chance that Nitish Kumar might come on to their side? इशादता, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर साहब ने भी इसकी टाइमिंग को बताया. देखिए, पॉलिटिक्स में टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और आपको याद होगा कि 2014 में जब नीतीश कुमार की पार्टी एक तरह से लोकसभा चुनाव में वाइप आउट हो गई थी, तो नीतीश कुमार ने सबसे पहला काम क्या किया, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से ये वॉइसेस आ रही थी कि हमारी इतनी बुरी हार क्यों हुई. नीतीश कुमार ने सबसे पहला काम किया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और मांझी को चीफ मिनिस्टर बना दिया. नीतीश कुमार वही काम इस समय आरजेडी के साथ कर रहे हैं. जो अभी बाईपोल नीतीश कुमार की पार्टी ने हारा है, कुर्नी का जो बाईपोल, वो एक तरह से डायरेक्ट फाइट थी, जेडीयू वर्सेस बीजेपी की फाइट थी. और नीतीश कुमार के लिए साबित करना था कि भाई सरकार बीजेपी से अलायंस तोड़ने के बाद भी मैं उतना ही मजबूत हूँ, मेरे पास सोशल कॉम्बिनेशन जो 15-16% का वोट शेयर है वो इंटैक्ट है, और ये महागठबंधन के साथ तो मैं बिल्कुल ही अनस्टेबल हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता. लेकिन हुआ क्या कि कुर्नी में बुरी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी हार गई. अब नीतीश कुमार ये आरजेडी को दिखाना चाहते हैं कि उनके और जो जेडीयू की जो ट्रस्ट फैक्टर है, और ढेर सारे लोगों ने ये भी कहा कि जब आपके पास, आप अगर कुर्नी के इलेक्टोरल उसको देखें, जातीय समीकरण को देखें, तो वहाँ पे 40,000 लोग कुशवाहा कम्युनिटी के हैं जो नीतीश कुमार का कैंडिडेट था. इसके अलावा अगर यादव को देखें तो 25,000 यादव हैं, मुस्लिम भी इतनी ही तादाद में हैं. इसके अलावा जो छोटी जातियां हैं वो भी 10-15 हज़ार के आसपास है. तो अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो आसानी से नीतीश कुमार जीत सकते थे. तो इसका ये मतलब हुआ कि आरजेडी का वोट ट्रांसफर उतना नहीं हुआ नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक था वो भी उन्हें वोट नहीं दिया. तो उस वोट का जो ट्रांसफर का जो ट्रस्ट फैक्टर है, आरजेडी के जो वर्कर हैं उनको ये लगता है, आज भी लगता है कि नीतीश कुमार तो अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये कभी भी छोड़ के चले जाएंगे, और ये सब कुछ जो बोल रहे हैं ये सिर्फ 2024 के लिए बोल रहे हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है. तो नीतीश कुमार उस ट्रस्ट फैक्टर को भी बिठाना चाहते हैं तेजस्वी के दिमाग में, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के दिमाग में, क्योंकि नीतीश कुमार का इस समय जो, जिसको कहते हैं ना कि आपकी आंख बिल्कुल है कि निशाने पर, नीतीश कुमार का निशाना 2024 में है. उनको है कि जो 15-16 सीटें जो जीती थी पिछली बार, तो अगर हमारे पास लोकसभा में नंबर्स होंगे, अगर महागठबंधन आरजेडी भी बेहतर करेगी, तो उस नंबर्स के आधार पे वो फ्यूचर की पॉलिटिक्स कर सकते हैं. और इसीलिए उन्होंने टाइम बाय कर लिया है. उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी के लीडरशिप में होगा, तो 3 साल का तो उन्हें मिल गया ना, कि भाई 3 साल का मुझे पीरियड मिल गया, और 2024 में इस अलायंस के साथ में, आरजेडी के साथ में, ट्रस्ट फैक्टर ये सब करते हुए अगर मैं 15-16 अपने एमपी फिर से जिता लूँ, तो उसके बाद विन विन सिचुएशन नीतीश कुमार के लिए. उसके बाद कल की तारीख में नीतीश कुमार क्या करेंगे कोई नहीं जानता. लेकिन बीजेपी की अगर पॉलिटिक्स करें, देखिए बीजेपी के पास इस समय जो पिछला, अगर आप देखें 2017 में के पहले जब महागठबंधन की सरकार थी, तो बीजेपी क्या करती थी, सुशील मोदी रोज आते थे, रोज एक नया पर्चा लेकर सामने आते थे, और रोज करप्शन के कोई ना कोई वो खुलासे करते थे. तो बीजेपी का काम है इस समय उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का, कि ये जो अलायंस है वो कैसे कमज़ोर हो.
और आप देखेंगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी और बड़ी चालाकी से देखें कि जब अपोजिशन में बीजेपी थी तो वो मिसरूल, आरजेडी का जो गुंडा राज और ये सारे पे हमला करती थी। लेकिन बीजेपी के निशाने पर इस समय तेजस्वी यादव नहीं है बल्कि नीतीश कुमार है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये जो 16% का वोट शेयर है जो महादलित का है, पहले तो इसको खिसकाओ नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार चूंकि लगातार डिक्लाइन पे हैं, 2010 के बाद देखें कि नीतीश कुमार लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार की जो जड़ें हैं वो कैसे उसमें मट्ठा डाला जाए, बीजेपी का एजेंडा ये है। और हालांकि अमित शाह ने ये बहुत इंटरनल मीटिंग में कहा है कि अब किसी कीमत पे वो दोबारा नीतीश कुमार को नहीं लेंगे लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, और अगर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को धोखा दे दिया तो बीजेपी हो सकता है कि फिर से उनके साथ अलायंस कर ले। तो बीजेपी की फिलहाल की जो स्ट्रैटेजी है कि वो मट्ठा डालो और नीतीश कुमार का जो बचा हुआ जो इमेज है उसको खत्म करो, और महादलित का जो वोट बैंक है उसको कैसे ग्रैब करो। डीके सर, आपके लिए एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम संकल्प। ही सेइंग, हेलो डीके सर, Bihar used to be the most noise-making political arena, but today it is on mute. Nitish has lost most of his political capital. His government is on the back foot and even unpopular among the masses. In fact, Nitish has been quite neurotic in his current term. ये हमारा word नहीं है. This is something our viewers have sent to us. Yet, you see the BJP is doing a congress in Bihar. They may, what's wrong with Bihar BJP? They may win Lok Sabha in Modi's name, but won't win in 2025. It's quite plausible because we have seen in state after state you have difference in the voting pattern in Lok Sabha elections and assembly elections. As for the BJP's problem in Bihar, it does not have any mass leader as such. All these years during their coalition days with the JDU, it was Social Modi who was the face. And Social Modi is an important leader, but he is not a mass leader as such. After that also, whatever experiments BJP has made, like at one point of time, Nityananda Rai was being projected. He is still being projected because he is a union minister here. Now you have somebody like Jaiswal who is the state BJP chief. Many other leaders, promising leaders I would say, for instance Rajiv Pratap Rudy. They are on the sidelines. So you do not really see any charismatic figure. So in the assembly election also, you cannot be seeking votes for Modi. Although on the ground, you still see a lot of buzz for BJP. I mean, more than what you see for the JDU. But in the absence of a CM face, you have one side, you will have Tejashwi Yadav, on the other, Modi. In the assembly elections, it doesn't really work. So this is a big problem for the BJP. And somehow the party is still not trying to prop up anybody. They still have 3 years. Now, on that point, DK, I'd like to get another question to you. And this is on whether or not there's a space for a third kind of formation to come up. And in that regard, we have a lot of questions on Prashant Kishore's Jan Suraj Yatra. One of our viewers is asking us, what kind of role can someone like a Chirag Paswan and Prashant Kishore play in the 2024 Lok Sabha as well as the 2025 assembly elections in Bihar? Can Prashant Kishore, Chirag Paswan and BJP come together in Bihar to counter Nitish and Tejashwi? Chirag Paswan, I'm sure Chirag Paswan may be looking to go with the BJP. You saw Chirag Paswan campaigning for the BJP candidate in by-elections. So looks like there will be an understanding, depending on what kind of understanding that is, because Chirag does not want his uncle to be part of the union cabinet. So if BJP agrees to that, although BJP wants the splinter groups to come together, but it's unlikely to happen. Chirag is adamant. If that happens, I think Chirag will have a clear understanding with the BJP. I mean, that's what it looks like right now. As for Prashant Kishore, Prashant Kishore has been targeting everybody. But in politics, post-elections, before elections, I don't really see any tie-up happening between Prashant Kishore or any other party. Post-elections, depending on results, all possibilities are there. शंकर, आपका इस पे क्या कहना है कि चिराग, प्रशांत किशोर along with BJP countering तेजस्वी नीतीश? देखिए, चिराग पासवान के लिए तो निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी है, और बीजेपी भी ये चाहती है कि चिराग पासवान की फैमिली जो है उसको यूनाइट करके, आप ये देखिए कि वोट तो है चिराग पासवान के पास में, उनके चाचा के पास में कोई वोट नहीं है। चूँकि बीजेपी और नीतीश कुमार उस समय चाहते थे कि उनके दल में वो सारा खेला करके चिराग को वो किया जाए, पनिश किया जाए, तो इसलिए बीजेपी को उनके चाचा को मंत्री बनाना पड़ा। लेकिन आज की तारीख में वोट चिराग
के पास में है। और जिस तरह से आपने देखा कि कुर्नी के बाईपोल में बीजेपी, खास तौर से अमित शाह उन्हें दिल्ली बुलाया मीटिंग करने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप कैंपेन करें। और जो दलित वोट बैंक है जिसमें चिराग की पार्टी का एक तरह से कहें कि होल्डिंग है, वहाँ पर उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया कि जो नीतीश कुमार की शराबबंदी का जो इशू है उसके कारण सबसे ज़्यादा जो विक्टिमाइज हुआ है वो दलित हुए हैं। और जैसे कि सुशील मोदी कह भी रहे थे, कल भी पार्लियामेंट में कह रहे थे कि बिहार में जो सारी कोर्ट हैं, जो अदालतें हैं, उनका काम सिर्फ यही बच गया है कि जो शराब पी के आया है उसको जमानत देने का काम, और ये सारे जजेज उसमें व्यस्त हैं। पूरी जुडिशरी को इंगेज कर दिया नीतीश कुमार ने इस काम के लिए। तो चिराग पासवान ने इस इशू को जोर शोर से उठाया और हो सकता है उसका फायदा भी मिला हो बीजेपी को। लेकिन निश्चित रूप से चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि ये बेस्ट सिनेरियो उनके लिए है आज आने वाले दिनों में, लोकसभा चुनाव के पहले, कि कैबिनेट में उन्हें पोर्टफोलियो मिल जाए और उनके चाचा को वहाँ से ड्रॉप कर दिया जाए। जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, देखिए प्रशांत किशोर चूंकि बीजेपी से, तो अमित शाह से डिफरेंसेस की वजह से वो बीजेपी से उनके संबंध खत्म हुए, तो इसलिए बीजेपी के साथ में उनका कोई अलायंस, कोई पोस्टपोल, मुझे उसकी संभावना नहीं दिखती है। लेकिन बीच में खबरें आई थी कि उन्होंने शायद रीच आउट किया था या फिर, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ भी बिल्कुल वो सबके साथ वो रीच आउट कर रहे हैं, वो इस समय फ्री हैं और कांग्रेस से लेकर जिसके साथ भी उन्हें कुछ अवसर मिल जाए तो इसलिए वो सारा एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिले। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही जातिगत समीकरणों में उलझी हुई पॉलिटिक्स है। उसमें पीके को, उस कास्ट को तोड़ के अपने लिए जगह बनाने में बहुत समय लगेगा। फनीली एनफ, लेकिन प्रशांत किशोर की यात्रा पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड नवल किशोर चौधरी जी, मैं ये क्वेश्चन आपके पास ले जाना चाहूँगी क्योंकि आप पटना में हैं और वहाँ पे आप देख मतलब यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट पीके's यात्रा इज हैविंग। तो एक हमारे यूजर हैं, उन्होंने पूछा, प्रशांत किशोर के जन सुराज यात्रा इज गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन बिहार. Such a movement to build a party with internal democracy has never been attempted in India, to my knowledge, including Aam Aadmi Party, which did not formalize any internal party democracy. I suspect come 2025, this may be the only game in Bihar. How do you see Jan Suraj's chances in 2025? तो essentially Jan Suraj का assembly election में क्या होगा, क्या future है? देखिए, प्रशांत किशोर की credibility अभी नहीं है। वो जहां जा रहे हैं क्राउड मिल रहा है। मैं बेतिया गया था, हमको कुछ दूसरे आउटरीच प्रोग्राम में जाना था इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पर। एक जगह नहीं मिलती, उनके पास पैसे बहुत हैं, हम उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। अरे एक होटल, आपको 5 स्टार होटल भी किसी को नहीं मिलेगा, सारे होटल्स बुक हैं। तो ये ठीक है, उनका पास एक क्राउड है, उनके पास एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैं हम्बल ढंग से आपको कह रहा हूं कि जो लोग सोचते हैं कि केवल स्ट्रैटेजी से इंडियन पॉपुलेशन को जीत का विश्वास ग्रहण, वो गलत है। All right, thank you so much for joining in on this episode of Political Adda. Thank you so much, Professor Chaudhury, for joining us. Do keep watching this space for our next episode. We come up with a weekly edition of this show every week. Thank you so much for watching.